सो हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस कोर्टरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय योर ऑनर. What is this training that we are talking about, and why is this training non-negotiable for any law student or a junior advocate? And what is the return of investment for this training program? So let's start. So basically, हम सब ने ये सुना हुआ है एज लॉ स्टूडेंट्स एंड देन एज जूनियर एडवोकेट्स. ये एक बात सबको पता है, आम बात है कि जब आप लिटिगेशन एंटर करते हो देन स्टार्टिंग के 3-4 साल डिपेंडिंग अपॉन वंस एबिलिटी एंड नॉलेज, स्टार्टिंग के 3-4 साल 5 साल आपको कोई इनकम नहीं होती, आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है, कोई रिटर्न नहीं होता है. इसलिए मैनी लॉ स्टूडेंट्स प्रेफर कॉर्पोरेट ओवर लिटिगेशन. और बात ठीक भी है बिकॉज लॉ स्कूल आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है एंड कोर्ट्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन वर्क ऑन वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं ये जो आप प्रैक्टिस करके सीखते हो डे बाय डे. तो आप आफ्टर ग्रेजुएटिंग आप किसी लॉयर के अंडर या किसी सीनियर के अंडर आप ज्वाइन करके उनका चेम्बर बेसिकली एक जूनियरशिप का पीरियड अंडरगो करते हो जहाँ पे आप इसी प्रैक्टिकल प्रोसेस को सीखते हो. अब after you undergo this juniorship period, then you become more aware of this practical part, and eventually after 3 to 4 or 5 years depending upon one's knowledge and ability, आप सेटल डाउन होते हो, आप अपनी एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस फिर शुरू करते हो. So basically this your honor courtroom training program has been designed, and the basic idea behind this program is that वो जो 4-5 साल की मेहनत होती है वो चीज़ हम कैसे जूनियर एडवोकेट्स को और लॉ स्टूडेंट्स को हु विश टू परस्यू लिटिगेशन, वो कैसे हम इन बच्चों को, इन नए एडवोकेट्स को, जूनियर एडवोकेट्स को सिखा सकते हैं in a span of say 2 to 3 months. So the basic idea behind this program is this कि what are those basic skills जो आप जितना जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा रहता है आपके लर्निंग कर्व के लिए और आपकी करियर ट्रेजेक्टरी के लिए इन दिस प्रोफेशन. सो हम देखते हैं कि फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड जूनियरशिप पार्ट. तो जैसा कि अभी हमने बात की कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग आप जूनियरशिप का एक पीरियड अंडर को करते हो और डिपेंडिंग अपॉन वंस एक्सपोजर एंड नॉलेज एंड स्मार्टनेस आप फिगर आउट करते हो द प्रैक्टिकल पार्ट एंड यू बिकम कन्वर्जेंट विद दैट, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर 3 to 4 or 5 years you settle down. So what during this इनिशियल पीरियड जहाँ पे आप लर्न कर रहे हो तो चीज़ों को, many students, many new advocates, many junior advocates, they feel completely lost. They feel कि they do not have any mentorship, they do not have any guidance as to what do we need to make out of this whole process. कि हम फाइल तो पढ़ रहे हैं बट हमें फाइल पढ़नी कैसे है, क्या पूरी फाइल पढ़नी है, अगर कल 10 मैटर लगे हैं तो हमें 10 फाइल पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है कि मैटर किस स्टेज पे है और जिस स्टेज पे है उसकी क्या ग्रेविटी है कि हम उस हिसाब से मैटर के लिए प्रिपेयर करें, हम कैसे ड्राफ्टिंग को और बेहतर तरीके से सिर्फ फाइल पढ़ते 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 नहीं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे ड्राफ्टिंग को सीखें, कैसे ड्राफ्टिंग को अप्रोच करें, हम कैसे अपने आप को ये प्रिपेयर करें मेंटली कि अब हमें आर्ग्यू करने हैं केसेस जज के सामने. तो ये बेसिक स्किल्स पे अगर आप 2 से 3 महीने में सीख जाते हो, आप एक लॉ स्टूडेंट हो जो ये सोच रहा है कि मैं लिटिगेशन को अपना करियर बनाऊंगा, या अभी अभी आप ग्रेजुएट हुए हो या आप 1-2 साल हुए आपको ग्रेजुएशन के एंड यू आर स्टिल अ जूनियर एडवोकेट, तो ये स्किल्स ही डिटरमाइन करती हैं आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री. तो आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे कि जो नया एडवोकेट है, द जूनियर एडवोकेट, बेसिकली दे आर लॉस्ट without any guidance, and after and once you get conversant with the affairs, only then
you are able to establish your practice and you find your niche and so on. Then the other part, as a law student you're just doing merely passively observing the processes. You are reading files, you're performing clerical tasks, doing drafting, research, and all. But once you undergo this training, then you become an active contributor, इन द सेंस कि नाउ अब आप जिस चेम्बर को ज्वाइन करते हो वाइल अंडर गोइंग एनी इंटर्नशिप, if you are in college or when you are have become an advocate, enrolled yourself as an advocate, then you become an active contributor to the chamber, to the senior you join. आप अपने इंसाइट्स दे पाते हो, आप फाइल रीड कर सकते हो बेटर देन दी अदर्स, आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो better than the others, keeping in mind those things intact, those principles intact, which shapes your journey. Now, how training accelerates the litigation learning curve? You gain procedural competence instantly. You master courtroom mechanics, case file management, registry navigation. You learn the unwritten rules. You learn how to read the file smartly. You learn how to research for a case more smartly from professional point of view. You learn how to argue. What are the basics of arguing before the court? So understand as if this is a flight simulator for lawyers. As pilots do their flight simulation before actually flying those jets and planes, similarly, you also get to practice the actual courtroom skills in this program, so that at the end of this program you are more confident and self aware of your skills. Now, when we talk about the return on investment, so let's have a look at this image. First of all, return of investment for law students. It saves you 6 months of post graduation confusion. You gain foundational knowledge of court mechanics before you even start practicing. Then you avoid a 2 3 year career mistake. Discover if litigation is the right career. You make a more informed choice when you undergo this training. Then upgrade internships from clerical tasks to high value work. You add value to the chamber or firm you join. Then for junior advocates, you cut short 1 to 2 years of career stagnation. You avoid getting stuck with non legal tasks due to lack of functional skills. You achieve faster financial independence because the more you imbibe, the more you learn these skills on your own and develop that mindset, the more beneficial it is for you to eventually start your own practice. Litigation rewards patience, but only if a direction and a strategy exists. Otherwise, the dropout rate for those who are litigating in the initial years is very high. Students often join litigation, but after 2 to 3 years of struggle and without any direction, they feel lost and they switch to corporate or abandon this profession fully. Now, basically, what are those skills that we'll be discussing in this? We will be training you with. So, firstly, we will talk about how to select a forum for your practice, then, how to plan your day according to the business of the court, according to the business of your senior, then, how to read and analyze a case file, then, how to navigate what are the basics of filing process, then, drafting. We will be doing extensive drafting for trial and appellate forums. Then we will learn the basics of arguing before court, and you will receive a practical toolkit, a courtroom exposure handbook that would be handy for your litigation journey when you are starting out as a junior lawyer or you are a law student. So you can contact us on our WhatsApp
for the more details of this program. And our batches are starting very soon. You can contact us on WhatsApp or email. These are our Instagram and Telegram handles. You can also contact us or reach out us at there. So I hope you find value in this courtroom training program, and this program, I can assure you, would save much precious time. Even if you are a law student, you would be in a position, after you undergo this training, you would be in a position to make a more informed choice. And if you are a junior advocate, then trust me, it would help you in ways that you would thank yourself for doing this training program, because it will imbibe in you the basic necessary skills that would give you that mindset and that confidence, so that you can approach litigation with more clarity and confidence and move ahead with your litigation journey. So thank you.